In this module, we shall consider another result. The last theorem should be viewed as saying that a homomorphism phi from G to G prime preserves normal subgroups between G and phi G. तो पिछले थ्योरम के अंदर हमने देखा कि नॉर्मल सब ग्रुप्स जो हैं वो प्रिजर्व हो रहे हैं between G and image of G, not in G prime. It is important to note that phi n may not be normal in G prime. तो it is not necessary that कि हमारे पास image of n under phi normal subgroup हो G prime का, but हमने थ्योरम में जो प्रूव किया है image of n under phi is the normal subgroup of phi G, even though n is normal in G. Let's consider an example. Phi from Z2 to S3 is a map. Z2 here is the group under addition modulo 2, and S3 is the symmetric group which contains the elements rho naught, rho 1, rho 2, mu 1, mu 2, mu 3. Here rho naught is the identity permutation and mu 1 is the permutation in which we have fixed 1. 2 goes to 3 and 3 goes to 2. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो इसको डिफाइन कर रहे हैं phi 0 equal to rho naught identity of Z2 maps on identity of S3 and phi 1 जो कि Z2 का जनरेटर है और पूरे का पूरा Z2 साइक्लिक ग्रुप है वो उससे जनरेट हो रहा है, वो mu 1 के ऊपर मैप कर रहा है. तो इमेज सेट हमारे पास रो नॉट mu 1 आ जाएगा अंडर phi. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Z2 with itself नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन क्या इसकी इमेज आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है S3 की? तो the answer is no, because rho naught mu 1 is not a normal subgroup of S3. रो नॉट म्यू 1 S3 का सब ग्रुप है लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है. अगर आप कोई मतलब S3 के अंदर से परमुटेशन चूज कर लें, से म्यू 2 अगर आप चूज कर लें और म्यू 2 को म्यू 1 से मल्टीप्लाई करें और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन म्यू 1 को म्यू 2 से मल्टीप्लाई करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, you shall see that we have different permutations rho 1 and rho 2 respectively. Rho 1 is 1 2 3 and rho 2 is 1 3 2. You can check this computation at home.